हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे मैं आ गया हूँ आप लोगों की डिमांड पे एक वीडियो लेकर के, जिसमें आप लोगों ने सीरीज के बारे में बात किया। तो हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। एक पार्ट में हम लोग नंबर सीरीज करेंगे एंड दूसरे पार्ट में हम लोग लेटर सीरीज करेंगे। तो आज नंबर सीरीज को बहुत बेसिक से एकदम आराम से समझते हैं कि क्या क्या बेसिकली पैटर्न हो सकता है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। मैंने इसको कुछ जो है वो अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड किया है। जैसे पहला स्टेप्स हमारे पास क्या हो गया कि डिफरेंस, ऐसे सीरीज जिसमें डिफरेंस के बेसिस पे पैटर्न्स होता है। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, प्रोडक्ट हो सकता है। पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि स्क्वायर और क्यूब में भी सीरीज चल सकता है। पॉसिबिलिटीज इन सारी चीजों का मिक्सअप का भी हो सकता है। सो दैट इज कि मिसलेनियस मतलब इनके अलावा कुछ सीरीज हो सकती है। और एक ये हो सकता है कॉम्बिनेशन, मतलब डिफरेंस, प्रोडक्ट, स्क्वायर्स, इन सब की कॉम्बिनेशंस के साथ भी सीरीज बन सकता है। तो एक एक करके सबसे पहले बेसिक से इसको समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि डिफरेंस सीरीज की अगर मैं बात करता हूं, तो डिफरेंस सीरीज में ऐसा कुछ समझिए कि पहला आपके पास है 3, देन आपके पास आ गया 5, देन आपके पास आ गया 7, देन आपके पास आ गया 9 एंड देन आपके पास आ गया 11, देन आपके पास आ गया 30। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सर डिफरेंस मेरे पास आपका आते जा रहा है, दिस इज कांस्टेंट, हर बार क्या हो रहा है, तो सर +2 हो रहा था। इसका मतलब है कि नेक्स्ट मेरे पास +2 हो जाएगा 13 में से, तो मेरी आंसर्स कितनी मिल जानी चाहिए सर, 50, राइट। दिस इज द वन वे डिफरेंस का मतलब डिफरेंस कांस्टेंट है, आपके पास चेंज नहीं हो रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटीज यहीं पे ध्यान से समझिएगा कि क्या हो सकता है सर, दिस इज 3, देन 5, देन 9, देन 50, देन 23। नो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट। So now look at the difference कितना है. So here the difference is at first +2, then the difference is +4, then the difference is +6, and I can say then the difference is +8. So as you can see कि difference एक order में increase कर रहा है, that is 2, 4, 6, 8, which means कि next difference मेरे पास कितने का होना चाहिए, तो sir the next difference should be of 10, which means कि यहाँ पे जो number आनी चाहिए that should be 33। तो ये भी डिफरेंस का एक पैटर्न है, बट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है। इन द सिमिलर वे डिफरेंस कैन डिक्रीज ऑल्सो। एक और डिफरेंस का पैटर्न मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर के चलता हूँ। लेट अस से अगेन स्टार्ट विद सेम 3, दिस इज 5, देन अगेन दिस इज 9 एंड देन इज 17 एंड देन इज 33। नाउ यू नीड टू टेल कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट। तो इफ आई लुक एट डिफरेंस, तो यहां मुझे डिफरेंस कितना मिल रहा है, 2, द हियर डिफरेंस इज 4, द हियर डिफरेंस इज 8, द हियर डिफरेंस इज 16। so as you can see कि difference are basically increasing and each difference is basically 2 times of the previous difference, which means if this difference is 16, here the difference must be 32, and we can say this should be nothing but 65. So as the difference is increasing, difference can decrease also. Now let us say for an example, let us say this is 132, then this number is 100, this is 72, this difference is 48. Now what can be the next difference? So we need to check here, the difference here is what, sir, this is minus of 32, the here difference is how much, so this is 30 minus 2, this is basically minus of 28. If you add 28 you will get 100. This difference is how much, sir, can I say this difference is 24. So accordingly the next difference should be, if this is 32, this is 28, this is 24, so you can say this is 4 8s, this is 4 7s, this is 4 6s, so this must be 4 5s, or the difference are basically decreasing by 4, so here it will be basically minus of 20, and hence this result should be 28. आ रही बात समझ में? तो ये सारे मेरे पास डिफरेंस के पैटर्न्स हो गए। सो पहले हम लोग एक एक करके टाइप सीखेंगे एंड उसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर इसको प्रैक्टिस भी करेंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट प्रोडक्ट सीरीज। सो प्रोडक्ट सीरीज हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेट अस से फॉर एन एग्जांपल, हियर इट इज 2, द नेक्स्ट इज लेट्स से 6, द नेक्स्ट इज लेट्स से 12,
The next is, let's say, 36. And the next is, let's say, 72. Now what should be the next? So if we need to check, so 2, this is 6. This is how many times? Sir, this is into 3. 6, this is 12. This is how many times? Sir, this is into 2. 12, this is 36. This is how many times? This is into 3. 36, this is 72. This is how many times? This is into 2. So as we can see, the basically product are 3, 2, 3, 2 alternatively. So which means next it should be 3. So here we should multiply it with 3 and we can say the answer should be nothing but 260. Right? Let us look at the another pattern as well. Again start with 2. Then let's say this is 4. Then let's say this is 12. Then let's say this is 60. And let's say this is 420. Now what should be the next? So if we do check out very carefully, we can see that this is into 2. And this is into 3. This is into 5. This is into 7. So now observe these numbers with V multiplied. This is 2, 3, 5, 7. This is not all odd. Keep in mind here is 2. So what are the common between these numbers are basically these are in increasing prime number, which means 2, 3, 5, 7. The next should be 11, not 9. Okay. So we will multiply here with 11. What we can say? This is 4, this is 6, this is 2, and this is 0. So this becomes our answer. Now let us understand the another pattern as well. What can be the another pattern? Let us say this is one more time. This is 2. This is 4. This is 12. This is 48. And this is 240. What should be the next? So if you look at very carefully, so here we multiplied with 2. Here we multiplied with 3. Here we multiplied with 4. And here we multiplied with 5. So here we will multiply for sure with what? With 6, sir. Because here the numbers are in increasing and 1 by 1, which means this number should be 6. So what we will get here is 1440, and this should be the number. So we need to check what patterns goes on when this series are basically in the product. How you will identify the series are basically the different series or the product or whatever else, that I will tell you when we will discuss the questions, ki how to identify the pattern, right? So first of all, learn the pattern and then we will learn how to identify the pattern. Okay. Now, the next is square or cube series. Let us say the first is 1, then is 8, then is 27, then is 64, then is 125. So what should be the next? So as we can see, this number is nothing but 1 cube. This number is 2 cube. This number I can see ki this is 3 cube. This number I can see is 4 cube. This number I can see is 5 cube, which means the answer should be 6 cube, and this is nothing but 260. ओके सर, राइट? तो ये सर ये तो बहुत सिंपल था, आसानी से दिख रहा था. चलिए मैं आपको एक ऐसा लेकर के चलता हूं जिसमें शायद आपको आसानी से विजिबल ना हो. ठीक है, पैटर्न यहाँ पे क्या चीजें हो सकती है कि लेट्स से दिस इज सर 2 एंड दिस इज 6, दिस इज लेट्स से 12, this is 20, and this is 30, right? What should be the next? So you can see कि this, इधर you can see like this कि सर ये multiply दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है. तो सर यहाँ पे इसकी एक पैटर्न आपको जो मिलेगी वो मिलेगी कि सर can I write this as 1 square plus 1? The next one can I write as 2 square plus 2? The next can I write as 3 square plus 3? The next can I write as 4 square plus 4? And the next can I write as 5 square plus 5? The next can I write as 6 square plus 6? Because all the numbers are in increasing order. So here
we can say the result becomes 36 plus 6 is 42. Now some of you might say कि sir इसको क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, this is 1 into 2 and this can I say as 2 into 3, this can I say as 3 into 4, this can I say as 4 into 5 and this could be written as 5 6. So sir this becomes 6 into 7. Yes, so n square plus n is basically n into n plus 1 na? So you can write it like this as well. So whatever the pattern you identified, if that fits, apply that. Definitely you will get the correct answer. Now let us say what is the other possibilities. Sir, this is 2. Next is, let's say 12. This is 36. This is 80. This is 150. What should be the next one? So as you can see that this is nothing but what we can say here. This is 1 cube plus 1 square. This could be written as 2 cube plus 2 square. This could be written as 3 cube plus 3 square. This could be written as 4 cube plus 4 square. This could be written as 5 cube plus 5 square, which means this could be written as 6 cube plus 6 square. Now 6 cube becomes 260 plus this is 6 square is 36. So I can say that this becomes 252 and this should be the answer. So all these are patterns. So this could be n square plus n, n cube plus n as well. N cube plus n pattern will look like this. This is 2. This is 10. This is 30. This is 68. This is 130. Now what should be the next? So as we can see here, it is 1 cube plus 1. This 10 can be written as 2 cube plus 2. This 30 will becomes 3 cube plus 3. This 68 will become 4 cube plus 4. This 130 will become 5 cube plus 5, which means the next should be 6 cube plus 6. And this will become 216 plus 6 is 222. So here the answer should be 222. So like this we will find कि square और cube का series कैसे चल रहा है. Similarly, miscellaneous. So miscellaneous means let us try to understand. Suppose this is 1 and this becomes 3. This becomes 6. This becomes 8. This becomes 16. This becomes 18. Now what should be the next? So if you look at very carefully, so we are finding here, this is basically what? Plus 2. And this is what? So this is into 2. This is what? This is again plus 2. This is again into 2. This is again plus 2. So plus 2 into 2 plus 2 into 2. This is plus 2, which means here the answer should be into 2. And which is 18 2s is 36. So that is the one miscellaneous pattern. That means what? Plus is also happening and multiply is also happening. Second, let's say this is 5. This is 11. This is 21. This is 43. This is 85. What should be the next? So if you look at very carefully, what we did here is 5 2s are into 2 and then plus 1. So we are doing two operations here. First 5 multiplied with 2 and then added with 1. The same operations we are here doing. This is into 2 22, but this time not plus 1, this time minus 1. Similarly, this is again into 2 and then plus 1. This is again into 2 and minus 1. So which means next will again be into 2. This is plus 1 minus 1 plus 1 minus 1. This time again plus 1. So this becomes 170 and this should be the answer.
So like this, there will be so many possibilities when we are doing the miscellaneous series. Let me tell you the another possibilities, and this is very interesting. Okay, I'm saying this is very interesting. Let's look at this is 6, then is 27.5, and this is 57. This is 116.5. What should be the next one? So as you look at very carefully, what we did here is this is into 2 plus 1. Whatever pattern I am writing here, these all are standard pattern. That means what? You might get questions on this. So this is what, look at very carefully. This is twice, but one more. This is also twice. How much more? So if you look at very carefully, so this is into 2, but I'm getting only 26. So this is plus 1.5. So I can say that this is plus how much? 1.5. So next 27.5 to 57. Let us multiply it with 2 into 2. What you will get is 55. So 55 plus 2 will become 57. The next is 57 and multiply it with 2. What you will get is 114. Plus this is 2.5. You will get 116.5. So the pattern is into 2 always, and then plus 1 plus 1.5 plus 2 plus 2.5. That means what? We are adding, but not constant number. The number that we are adding is increases by 0.5, 0.5. So now as soon as we identified the pattern, we can find out the next. So again we will do multiply it with 2 and we will get 233. Next we need to add 0.5 more than this. So that will give us 236. So that means what? 236 will be our final answer. So this is how miscellaneous series goes on. Now let's look at the miscellaneous as well as the combinations, right? So miscellaneous is and combinations more or less you can say same. How? Because we have discussed some questions of combinations here as well. How, sir? The multiply and plus is also multiply and minus is also multiply. So you can say this series, whatever we discussed here, is the miscellaneous as well as the combination series. The combination series will have same like this as well. One more thing I'm gonna add here in the combinations is, let's say here this I'm adding is combinations as well as miscellaneous here also. Let us say, sir, if this is 23 and the next is 29, the next is 31, the next is 37. What should be the next? So if you observe very carefully, you will find out, sir, these numbers are basically increasing prime number. So 23 we are getting 29, 29 we are getting 31, 31 we are getting 37, 37 the next prime number, very next prime number you will get is 41. This basically covers in the miscellaneous part, right? And what we wrote here is these two are basically the combinations part. So overall you can say that this is basically the done here is combinations part, and what we are doing here is basically the miscellaneous part. Okay, now the second thing what we can say here is the pattern will also look like this. Let's say 23, but not the next prime number. One prime number we skipped, 31, then not the next prime number we skipped, then again not one prime number, so we skipped 40. So 23, the immediate next prime number is 29. That 29 we skipped here and we got the next prime number 31. Then again 31, the next prime number is 37, that we skipped here and we wrote 41. The next prime number is 43, that we again skipped here, 47. The next prime number here is 53, that we need to again skip, and after that what we will write here is 59. So here the answer should becomes 50. Sometimes you will find out the pattern like this as well in the miscellaneous. As I told you, what we are covering here is the miscellaneous part. So
next, let's say if the number is like this, 23, 57, 11, 13, 17, 19, what should be the next number? Observe very carefully. You are getting 23, then you are getting 57, and all of a sudden you are getting 4-digit number. And the next number is also 4-digit, but not so big with respect to the relation between 2 and 3 and 3 and 4. So this is basically the prime numbers. Look at very carefully. This is basically the consecutive prime numbers, 2, 3. The next prime number is 5 and 7 written together. The next prime number is 11, 13 written together. The next prime number is 17, 19 written together. Which means that the prime number after 19 is nothing but 23 and 29. So this should be your answer. So this is also a pattern, right? So I hope ये चीजें आपको clear आ रही हो. Now from here onwards, I will take you to practice some question. To practice some questions. Now before you go to the practice some questions, for every questions I will recommend you to please solve either with me or stop the video, solve, try, and then look what is the correct answers. So here the very first questions. If you look at very carefully, so as you can see by observing, sir, this is prime number. How we understand? At first you look at the numbers are looking prime number, and also you can see this is a pattern. Sir, this is +2 pattern, and this is +4 pattern. This is, sir, +6 pattern. This is again +2 pattern. Sir, this is again +6 pattern. So that means what? The difference pattern is not working here, and the number is looking also prime. If the difference pattern is not looking, look whether the number are prime or not. So 37, the next prime number should be 41. Hence the correct answers becomes option B. Let's look at the another number. Question number 2. So 12, this is 14, this is 15, this is 16, this is 18, and this is 20. Now, if we try to find out this series, so what we can say, 12 plus 2 will give you 14. Now 14 plus 1 will give you 15. Now 15 plus 1 will give you 16. Now 16 plus 2 will give you 18, and 18 plus 2 will give you 20. So now nowhere we are finding the pattern as 2, 1, 1, then 2 and 2. So no pattern at all we are finding. So that means what are the other possibilities that we can say कि possible हो सकता है यहाँ पे? Is there any prime number or any number that we are basically multiplying and subtracting, something like this? Now you can see कि miscellaneous में मैंने आप लोगों को बताया prime number, right? So if there is a series of prime, is it possible to there is series of composite as well? Right? Because the pattern is not coming out, difference, and obviously multiplication तो यहाँ पे है. So what is the pattern in that case? So what can I say? He said 12 is a composite number, and after 12 there is one number 13 that is not a composite. Let's skip that number, then we will come to 40. Then 15 is composite, 16 is composite, so 17 is not composite, let's remove that. 18, so 19 is not, let's remove that. 20, so next 20 is 21. Yes, this is composite number, so which means that 21 should be our answer. Now as you can see that this question is not so difficult, but we need to understand as the series of prime numbers goes on, the series of composite numbers also goes on, right? Let's move on to question number 3. 97, 83, 73, 67, 59. If you look at very carefully, sir, these numbers looks like basically a prime number, isn't it? Isn't it? Now, so let us try to understand. Let's try to write all the prime numbers in descending order. So 97, before 97, if you look at what we will get here is 89. Now as you can see 89 is skipped, this number is not taken. Next 89, what we can say is 83. After 83, what we can say is 79. After 79 we can say 73.
Again 79 is not taken out, 73 is. So which means the answer should be 59, and after 59 what we are getting here is 53, but that should be skipped. We cannot take the immediate next prime number. So the next prime number that we can get here is 47, and hence our answer should be 47. So here the alternate prime number we are taking, and in the miscellaneous I taught ki we will take the prime number in alternate and continuous, increasing, decreasing, whatever, anything can be the pattern. Now let's come on to question number 4. So as we can see the pattern here, this is 54, 66, 82, 102, 126. So if you look at the difference very carefully, you will find out 54 plus 12 we can get 66, right? Then 66 plus 16 we will get 82. Then 82 plus 20 will give you 102. Next 102 plus 24 will give you 126. So which means here the pattern is in difference, with differences increasing by 4. So 12, 16, 20, 24. I can say the next difference should be 28. So 26 and 28. We can say we will get 154. And the answer should be option C. Now let us look at the question number 5. What can be the pattern? So this is 7. If you look at very carefully, this is plus 4, this is 9. Let's look at the difference. So this time I'm writing like this. 11 minus 7, the difference is basically 4. 20 minus 11, the difference is 9. 36 minus 20, the difference is 16. 61 minus 36, and I can say the difference is 25. So if you look at very carefully, the difference is basically square of natural numbers starting with 2 consecutive. So this is 2 square, this is 3 square, this is 4 square, this is 5 square. So I must say this here it should be 6 square, right? Which means 61 plus 6 square, 36 should be our answer, and our answer should be 97. Let's do check out whether this match with the last one or not. So if this is 6 square, the next should be 7 square, which is 49. And yes, this becomes 146. Absolutely, we are correct. So 97 should be our answers. So as you can see that more or less the questions that we solve here, we solve on the basis of difference. And we got the pattern. What should be the pattern? Let's continue this and try question number 6. And let's see how you are getting. Are you able to see, sir, the first is 75, 0, 75. The next is just immediate 25. Then again 5. Then, which means, sir, if we look at very carefully, so from here the number must be multiplied. And if we understand from here, the number must be divided by some number. Let's look at what number we should divide this so that I will get 25025. So let's divide by this now, and let's see what numbers we are getting here. So we look at very carefully, we can divide it by 3. So that means what? If you divide this by 3, you will get this. Similarly, if we divide 25025 by 5005, you will get 5. Now if you divide 5005 by 715, sir, we are getting 7 here. Which means if we divide 715 by the number x, if this is 3, this is 5, this is 7, so this should be what? Right now I can say this should be 9. But we need to check also key whether this number is divisible by 9 or not. So 5 plus 1, 6 plus 7 is 30. No, not divisible. So another possibility is what? Either these could be consecutive odd numbers, or 3, 5, 7 is basically prime also, consecutive prime. So it is also possible. If 9 is not working, that means what? It can be 11. Let's do check out 11. So suppose if we divide, can you get some number or not? 715 upon 11. So if you look at very carefully, yes, we are getting 65 here.
Do check out whether 65 by 5 are giving you the next prime or not. So I can see this is giving 13. Should this satisfy 3, 5, 7, 11 and 13 is the prime, which means the answer should be 65. So how we understood here the difference is not working? Because the number suddenly decreased so high. So if the number is decreasing suddenly or increasing suddenly, there must be some multiplication is going on, or the number may be going in power or cube. Let's try this in question number 7 as well. Try to understand the pattern here. So this is 125. If you look at very carefully, can I get 375 by multiplying some number? Because 100 to 300. But if you look at this and this, you will find out that there are very much less difference. So let us try to find out what is the pattern here. So 125, this 375, this is 377, this is 1131, then is 1133. What should be the next? If you look at very carefully, sir, if I multiply here with 3 now, I will definitely get this number, exactly this number. And here we should not multiply, we should basically add what? Plus 2. So into 3 plus 2. Let's see whether this working here or not. Let us try to multiply it with 3 and check whether this works or not. So look at very carefully, 3 7 is 21, this is 2. Then 21 plus 2 is 23, 2. Then 9 plus 2 is 11. Yes, it's work. And if we add 2, it is also work. So we know the pattern is into 3 plus 2, into 3 plus 2. The next should also be multiplied with 3. So if we multiply here with 3, so what we'll get? Straight away, this is 3, 3, 9, 9. And I can say the answers what we are getting here is option number. So again, it worked. Now, let us try to put and solve question number 8. So this is 12, 21, 39, 75, 147. सर यहाँ देख करके मेरे को डबल के आसपास की फीलिंग आ रही है. क्या आ रही है क्या? इधर सर डिफरेंस भी हो सकता है, इधर डिफरेंस भी हो सकता है, इधर देखूं तो डिफरेंस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी, बट यहाँ पे सर ऑल ऑफ सडन इतना ज्यादा बढ़ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई का टर्म हो सकता होगा. तो क्या मल्टीप्लाई का हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको समझने के लिए देखते हैं. तो यहाँ डबल के आसपास लग रहा है ना, मैं डबल ही एक बार यहाँ पे चेक करने की कोशिश करूं एंड लेट्स से कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो लेट्स से मैं 12 से 21 कैसे आ सकता हूँ? तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? तो 2 के आसपास ही हो सकता है और कुछ तो नहीं. तो सर इंटू 2 करता हूँ, आई एम गेटिंग 24, बट हियर इट इज 21, तो दैट मींस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 3. ये आपका कॉम्बिनेशंस वाली चीजें आ गई. ठीक है, द मल्टीप्लाई एज वेल एज डिफरेंस. So now I'm getting here is 21. Let's say this work out with the second number or not. 21 into 2 will give you 42. But the result here is 39. So difference is of 3. Okay. So into 2 minus 3 is working. Let's check out another number. So this is 39 into 2. I can say this is 78. The minus 3 will give you 75. Yes, this works. 75 into 2 is nothing but 150. Minus 3 will give you 147. This also works. That means what? We are on the right track. So 147 into 2 will give you 294. Right? Now 294 minus 3 will give you 291. So 291, which means option number B. Yes, we did. Right? So I'm sure कि थोड़ी सी improvement हो रही होगी. Right? कि how to find out the pattern, how to check what is the pattern, how to cross check whether the pattern is satisfying or not, and then at last we come to the answers. But as far as the calculation is concerned, we should be very careful while doing the calculations. Try the another number. So 5, 13, 41, 85 and 257. So what we can say, sir, ये into 2 तो मेरे को दिख रहा है, into 3 भी दिख रहा है सर. If you look at very carefully, ठीक है, तो सर इनटू भी दिख रहा है, डिफरेंस भी दिख रहा है, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है. हाउ शुड वी आइडेंटिफाई इनटू चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है, कैसे? सो ऑल दिस यू कैन से बाय इधर द फर्स्ट 2 नंबर और द लास्ट 2 नंबर. इफ यू लुक एट वेरी केयरफुली, आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द पैटर्न फ्रॉम हियर वेदर द डिफरेंस और मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम हियर एज वेल. यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इफ यू लुक एट वेरी केयरफुल हियर, नाउ यू आर एबल टू फाइंड आउट द पैटर्न. कैसे सर? क्या आपको ये दिख रहा है कि ये 3 टाइम्स के आसपास जा रहा है? क्या ये दिख रहा है आपको 3 टाइम्स के आसपास?
तो लेट अस से अगर मैं इंटू 3 करता हूं, व्हाट पैटर्न आई विल गेट हियर? तो 85 इंटू 3, sir, exactly I am getting 255, but here it is 257. So let us do add 2 and we will get 257. Now, so what is here, sir? ये 3 times तो नहीं है, कितना टाइम्स दिख रहा है? 2 टाइम्स के आसपास. तो let us do मल्टीप्लाई कर दो. तो 41 into 2, सर आई एम गेटिंग 82, बट आपके पास तो 85 है. ओके, तो सर दिस इज प्लस 3 एंड दिस विल बी 85. नो इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, तो इसका मतलब आगे फिर से इंटू 3 प्लस 2 होना चाहिए. क्या ये चीजें हो रही है, वर्क कर रही है या नहीं कर रही? लेट्स डू चेकआउट. तो 31 इंटू 3 इज हाउ मच? 39 प्लस 2 इज हाउ मच? 41. वर्क कर रहा है सर. लेट्स डू चेकआउट हियर. सो 5 इंटू दिस टाइम इज व्हाट? 2, दैट इज 10, एंड इंटू 3, दैट इज 30. Yes, we did. We cracked. So into 2, then plus 3. Into 2, then this should be plus 3 here. And this is into 3 plus 2 into 2. So again into 3. So this result here should be 257. So it should be multiplied with 2. And I can say 514. So plus 3 होना चाहिए. एंड आंसर 517 होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं 3 ऐड करता हूं. सो द आंसर शुड बी 517. वी शुड बी वेरी केयरफुल बिकॉज 516 भी आंसर्स यहां पे दिया हुआ. ठीक है, तो मल्टीप्लाई किससे करना और ऐड क्या करना है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, लेट अस ट्राई टू क्वेश्चन नंबर 10 एज वेल. हियर इट सेज दिस इज 2 4 7 35 42 462. ओ गॉड. So again we are saying, ध्यान से समझना, again we can see कि सर इधर 35 42 तक तो मेरा दिमाग काम नहीं किया, क्या चल रहा है. But as soon as we saw 462, अब मेरे को लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, कुछ तो है सर. क्या गड़बड़ है? तो बिना प्रोडक्ट किए तो नहीं आ सकता ऑल ऑफ सडन इतना, तो पक्का से प्रोडक्ट करना पड़ा होगा. अब यहाँ पे प्रोडक्ट कितना किया होगा, कैसे करेंगे? तो आप सीधा सीधा 462 को क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए 42 से. जैसे ही डिवाइड करेंगे यू विल से कि दिस नंबर इज बेसिकली 11 टाइम्स. तो इसका मतलब सर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है कितना? 11. क्या यहाँ से आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है? नहीं सर. तो डिफरेंस हो सकता है, दिख रहा है क्या? हाँ सर. कितना है डिफरेंस? तो +7. शायद हो सकता है मल्टीप्लाइड प्लस का पैटर्न चल रहा हो. लेट्स सी. तो यहाँ पे फिर क्या है सर, प्लस भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी. अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सर पैटर्न मिलता है मेरे को 5 7 और 11, मतलब प्राइम नंबर का. तो बट इनटू है, प्लस है, फिर इनटू है, तो सर यहाँ प्लस होना चाहिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग. और प्लस कितना होगा? 3. सर फिर यहाँ क्या होना चाहिए? तो यहाँ इनटू होना चाहिए. तो इनटू कितना होगा? 2. तो यू कैन सी की पैटर्न मिल गया, इनटू प्लस इनटू प्लस इनटू. द नेक्स्ट शुड बी सर, तो नेक्स्ट शुड बी प्लस. एंड प्लस कितना नंबर हमारे पास करना पड़ेगा? तो 2 3 5 7 11. 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 13. So we should add 13 and we will get 4 7 and 5. So the answers become here is 475. Each and every questions again I am requesting आप पहले solve करें. Let us try to decode the logic. क्या logic है यहाँ पे इस series में? Check कीजिए. If you are getting the answers, fine. Not getting, that is also fine. That you will get something to learn here in this video. Then इसको वीडियो को फिर से प्ले कीजिए and do check out कि whatever you got the answer is correct or not. ठीक है, डिड यू एबल टू क्रैक द पैटर्न और नॉट, व्हाट इज द पैटर्न. सो ये सारी चीजें वीडियो पॉज करके पहले देखें, फिर आप इसको प्ले करके देखें. ठीक है, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11. दिस इज 2 10 30 68 and 130. सो लेट मी राइट at first the pattern here. This is 2 10, this is 30, this is 68, this is 130. Now if you observe very carefully, so 2 10 ऐड करके भी आ सकता है, मल्टीप्लाई 10 and 30 मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है और ऐड. ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालता हूँ आई एम गेटिंग 8. अगर मैं डिफरेंस यहाँ निकालता हूँ आई एम गेटिंग 20. अगर मैं डिफरेंस यहाँ निकालता हूँ आई एम गेटिंग 38. सो देयर इज नो पैटर्न एट ऑल आई कैन सी. सो 8, दिस इज 12. 12 के बाद यहाँ पे ऑल ऑफ सडन 18 बढ़ गया सर. एंड इफ यू लुक एट वेरी केयरफुली, यहाँ कितना आ जा रहा है सर? सो कैन यू से कि दिस इज 60 और नॉट 60, हाँ दिस इज 64, कैन आई से 62, 64 नॉट 62. तो 62 तो सर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा.
क्या मैं ऐसे देखूं कि 8 2 जा 16 आ रहा है, फिर 20 2 जा 16 में 4 ऐड हो रहा है, 20 में 2 माइनस हो रहा है, एंड यहाँ पे भी ये डबल में पैटर्न नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है कुछ, तो इसका मतलब क्या है? तो अगर ये सारी चीजें नहीं चल रही, डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब शायद यहाँ पे ये पावर चल रहा होगा। पावर का मतलब इधर स्क्वायर और क्यूब। कैसे? तो सर ये 2 की पावर 1 हो सकता है, या 1 में कुछ प्लस माइनस हो सकता है, ये 2 की पावर में कुछ मिल सकता है क्या? 3 की पावर करेंगे तो 1 मिलेगा ऐड करके, 3 स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे ये 4 स्क्वायर 16 एंड 4 का क्यूब 64 बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे जब भी पावर आएगा ना, तो हमेशा आप ध्यान से देखिएगा कि दिस विल मैक्सिमम टाइम स्टार्ट विथ लाइक दिस 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर होगा तो आप चेकआउट करने की कोशिश कीजिए इसको। सो इफ लुक एट वेरी केयरफुली यू विल फाइंड आउट कि सर 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, ये मेरे को मिल रहा है। अब इसकी पावर यहाँ पे क्या रखें, क्योंकि अल्टीमेटली तो 1 मिलता है, स्क्वायर क्यूब कुछ भी रख लो। तो सर यहाँ से चेक करके देखें कि ये 2 में किस तरीके से मिलता है। इफ लुक एट वेरी केयरफुली, तो दिस नंबर कैन बी रिटन एज 2 क्यूब + 2 एंड दैट विल गिव यू 10। तो सर इसको भी 1 क्यूब + 1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, मिल जाएगा ना, क्या दिक्कत। तो क्या ये 3 क्यूब + 3 में मिलता है क्या सर? यस मिलता है। ये 4 क्यूब + 4 में ये 5 क्यूब, तो नेक्स्ट नंबर शुड बी सर, तो नेक्स्ट नंबर शुड बी 6 क्यूब + 6। अगर ध्यान से होगा, मैंने एक पैटर्न भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है ये प्रीवियसली। सो 222। सो द आंसर शुड बिकम ऑप्शन बी। क्या चीजें समझ में आ रही है आपको कि कैसे पैटर्न चलते आ रहा है? लेट्स लुक एट सम मोर, कुछ और एग्जांपल्स मैं यहाँ पे करूंगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है सर? 95, 126.5, 138, 175.5, 188, 189 एंड 232.5। ऐसे जब भी डेसिमल में मिल जाए, इसका मतलब एक चीज जरूर समझना है, या तो कुछ चीजें ऐड हो रही थी जो कि 0.5 के डिफरेंस से इंक्रीज कर रहा होगा, या नहीं तो बेसिकली इसको डिवाइड किया जा रहा होगा और फिर ये इस तरीके की वैल्यूज आ रही होगी। सो फिर इफ आई लुक एट वेरी केयरफुली, तो 95 हमारे पास दिया हुआ है, 95 से 126.5 ये कैसे आ सकता है? क्या डिफरेंस करना चाहिए हमारे पास? तो इफ आई लुक एट वेरी केयरफुली, मैं यहाँ पे इसको डिफरेंस कर देता हूँ। सो 126.5 माइनस ऑफ 95, so 26 plus 5 is 31.5 I can say. Then यहाँ डिफरेंस मेरे पास कितना आ रहा है? If you look at very carefully, सर 138 में से माइनस 126.5 अगर मैं करता हूं, तो ये मेरे को 11.5 का डिफरेंस मिलता है, बहुत कम मिलता है। यहाँ पे 31.5 मिला, यहाँ 11.5 मिला। लेट्स सी द पैटर्न व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज, नेक्स्ट इज 175.5 माइनस 138। यहाँ मेरे पास कितना आ रहा है सर? दिस इज 0.5, 15 माइनस 8 इज 7 एंड देन सर 6 माइनस 3 इज 3, सो आई एम गेटिंग 37.5। चलिए एक और आगे देख लेते हैं। 189 से हमारे पास क्या पैटर्न आता है? 189 माइनस ऑफ 175.5, तो ये मेरे को कितना मिल रहा है? 13.5 मिल रहा है, राइट? सही है। अब यहां से मैं यहाँ पे देखूं तो सर ये मेरे पास इंक्रीज मुझे 6 का दिख रहा है। यहां से अगर यहां मैं देखूं तो सर ये मुझे इंक्रीज मिल रहा है कितने का? 2 का मिल रहा है। एक और चेक कर ले सर, है ही मेरे पास नंबर तो 232.5 माइनस 189, तो दैट मीन्स व्हाट, 11 इसमें ऐड कर दोगे, यू विल गेट 43.5। क्या ये 6 मिला? क्या यहाँ पे भी आपको ये 6 मिल जा रहा है क्या? यस सर, +6 मिल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे भी +2 कर दो, तो इस बार डिफरेंस मेरे पास कितने का आना चाहिए? तो सर डिफरेंस शुड बी 15.5। किस में से? 232.5 में से। तो मैं ऐड करके देखता हूँ कि कोई रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है। 5 + 2 7 एंड यहाँ से मेरे पास 8 आ गया। दिस इज 2, 3 + 1 is 4। Am I getting 248? Yes, we are getting 248। तो इसका मतलब है कि यहाँ दो डिफरेंस का पैटर्न चल रहा था, मल्टीप्लाई नहीं चल रहा, ये दिख गया। तो थोड़ा सा पेशेंटली आपने किया, आपको पैटर्न मिला, आपको आंसर्स मिल गया। चलिए इसी टाइप के एक और क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग फिलहाल। अब यहाँ पे इनकी कंबाइंड पैटर्न चल रही है, इनकी। इफ यू लुक एट वेरी केयरफुली, तो आप तुरंत तुरंत डिकोड कर पा रहे हो सर 14 + 3 is 17 इज गोइंग ऑन। 17 यहाँ का पता नहीं सर, बट यहाँ पे 23 है और ये 26 है, मतलब ये बढ़ रहा हुआ। तो सर क्या मैं यहाँ पे 20 बोल सकता हूँ? तो ये पैटर्न मैच करेगा 14, 17, 20, 23। यस,
इसका मतलब है ये दो तो पक्के से आंसर्स नहीं हो सकते सर। एलिमिनेट दीज ऑप्शंस। 20 के बाद 150 और एक 110। अगर मैं ध्यान से देखूं, थोड़ी सी लॉजिक लगाऊं, तो 150 मेरे को यहाँ पे इससे कम डिफरेंस मिलता है, इससे बहुत ज्यादा मिल जाता है। फिर अगर मैं 110 लगाता हूं तो इधर और इधर से डिफरेंस लगभग ठीक ठाक मिल रहा है। बट मुझे ये नंबर्स की पैटर्न समझनी पड़ेगी। 272, then it is 182, then what should be the here number that we do not know. This is 56 and this should be 20. Now if you look at very carefully, very means very carefully, sir difference तो workout नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है? So here the difference is of 90. Are you getting my point? Here the difference is of 90. अगर मैं यहाँ पे कुछ भी 90 का ये करता हूँ तो यहाँ डिफरेंस मेरे पास कितना आ रहा है सर? 36। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 36। 90 से 36 आप एक नंबर बस सिर्फ यहाँ और यहाँ लेंगे तभी आप पहुंच जाएंगे। तो ये मैच करते हुए 90 का डिफरेंस चल नहीं रहा है। 90 के बाद यहाँ पे मैं हाफ कर दूं तो डिफरेंस नहीं चल रहा है। ये नंबर हमारे पास, आप ऐसा कह सकते हैं कि सर ये 6 इंटू 15 में चल रहा था और ये नंबर मेरे पास 6 इंटू 6 में चल रहा है, ये आप कह सकते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि सर ये 18 इंटू 3 में 2 में मेरे पास आ गया और ये 18 इंटू 5 में है। तो क्या सर यहाँ पे 18 इंटू 4 और यहाँ पे 18 इंटू 3 नहीं हो सकता? तो आप खुद ही चेक करके देख लो। 18 इंटू 4 72 के डिफरेंस में ये कितना आ जाता है सर? तो ये 18 माइनस 7 11 110 आ जाता। मैच कर रहा है क्या? अरे हाँ मैच कर जा रहा है। यहाँ पे हम डिफरेंस देख ले सर, तो 18 3 इज 54। तो क्या ये मैच कर रहा है सर? जरा देखिए, 54 इसमें से माइनस कर दे तो 56 मिलेगा क्या? हाँ मिल गया सर। एंड ये 36। तो दैट मीन्स दिस शुड बी ऑप्शन सी। एक और चीजें अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको ध्यान से देखने पे ये चीजें दिखाई देंगी। इसको क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 के फॉर्म में। सिमिलरली दिस एज 7 स्क्वायर प्लस 7 के फॉर्म में। तो 4 प्लस 3 7 प्लस 3 इज 10। तो ये 10 स्क्वायर प्लस 10 के फॉर्म में। दिस इज 13, शुड 13 स्क्वायर प्लस 13 के फॉर्म में। एंड ये और चले जाइए तो ये आपको मिल जाएगा 16, तो 16 स्क्वायर प्लस 16 के फॉर्म में। राइट, मिल जाएगा मेरे पास 16 स्क्वायर इज हाउ मच? 256 प्लस उसमें 16 ऐड कर दीजिए। दिस इज 2, दिस इज 7 एंड दैट। तो ये इस पैटर्न पे भी मिल रहा है, लेकिन ये पैटर्न अगर ऑब्जर्व करना मुश्किल होगा तो आप इसके बेसिस पे चल सकते हैं और यहां से भी आपको आंसर्स मिल सकता है। द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th, दिस इज 1 8 27 16 125 36 343 64। सर ये सब या तो पावर 2 है या तो पावर 3 है कैसे वो लिखिए, तभी पैटर्न आपको मिल सकता है। तो 1 का 1 ही रहने दीजिए फिलहाल। क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब और तो दूसरा मैं लिख नहीं सकता। 27 को मैं एक ही लिख सकता हूँ सर 3 का क्यूब और दूसरा मैं लिख नहीं सकता। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो 16 को 2 के पावर में मत लेके जाइए, इसको 4 में लिखिए, 4 का स्क्वायर, क्योंकि आगे आपको 5 मिल रहा है। 125 कैन बी रिटन एज 5 का क्यूब। सर नेक्स्ट 636 है, दैट कैन बी रिटन एज 6 का स्क्वायर। 343 है, दैट कैन बी रिटन एज 7 का क्यूब। एंड 64 है, दैट कैन बी रिटन एज सर 7 है तो इसको 8 कर देते हैं, 8 का स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ कहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे है, और स्क्वायर कहाँ पे है? यहाँ पे है, और स्क्वायर कहाँ पे है? और कहीं पे भी स्क्वायर नहीं है। इसको स्क्वायर और क्यूब कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो जो क्यूब है उसमें ध्यान से देखते हैं। सर यहाँ पे मेरे पास ये क्यूब है और एक क्यूब मेरे पास यहाँ है और एक क्यूब मेरे पास यहाँ पे। तो 2 का 3 का 5 का और 7 का क्यूब है। तो 2 3 5 7 में एक पैटर्न कॉमन है, क्या? कि ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर की क्यूब है और नॉन प्राइम नंबर का क्या होगा? स्क्वायर। तो आई कैन राइट दिस एज स्क्वायर। तो ये पॉसिबल है। तो सर 7 8 के बाद 9 आता है ना, तो 9 आपके पास क्या है? प्राइम नंबर है या नॉन प्राइम नंबर है? नॉन प्राइम नंबर। तो नॉन प्राइम नंबर के केस में यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाना चाहिए? 81। तो मुझे तो यहाँ पे 81 मिलना चाहिए। कहाँ पे? यहाँ पे। तो आई एम फॉर श्योर 81, तो इसको मैं एलिमिनेट कर दूं। द नेक्स्ट नंबर हियर विल बी व्हाट? तो 81 के बाद फिर 9 के बाद फिर क्या आएगा? 10। तो फिर से ये नॉन प्राइम नंबर है, फिर मेरे पास स्क्वायर हो जाएगा एंड आई कैन से 100। तो मेरे पास ऑप्शन फिर एट लास्ट क्या बन करके आता है? 8100। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप
सोचो, इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी डिफिकल्टी लेवल की मैं बात करूं तो दिस इज ऑफ लेवल 2। इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो दिस इज ऑफ लेवल 2, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ ये इशारा करता है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा है तो आप इसको छोड़ सकते हो। 15th, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, दैट इज वाई आई एम सेइंग इट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे सर? 37, 31, 29, 23, 19, 17, 13 एंड 11, इसको कैसे टैकल करना चाहिए? विल गेट वेरी केयरफुली। सर ये सब नंबर प्राइम चल रहा है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा और काफी ऑब्जर्वेशन के बाद दिखेगा कि कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, बट हर दो प्राइम नंबर्स को क्या किया है, एक साथ लिख दिया है। तो 37 के बाद आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है? 31, 29, 23, 19, 17, 13, 11। 11 के बाद का प्राइम नंबर, मतलब बेसिकली जो 11 से पहले आता है, तो सर वो मेरे को क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। एंड 7 के पहले वाला प्राइम नंबर 5। तो इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 75। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा सवाल। सो आई होप शो कि यहाँ तक में थोड़ी बहुत आपको कुछ ना कुछ पैटर्न या सीरीज समझ में आया होगा। जैसा भी समझ में आया होगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ पे हम लोग समझते हैं थोड़े से बॉक्स वाले क्वेश्चन। मिसिंग नंबर निकालने, तो व्हाट इज द पैटर्न बेसिकली हियर? तो आई कैन सी कि 5, 3, 8 मिल जाता है सर। यहाँ सम करने पे मिल रहा है एंड यहाँ प्रोडक्ट करने पे मिल रहा है, तो दोनों चीजें तो हो नहीं सकती, या तो सम होगा या तो प्रोडक्ट होगा, तो इसका मतलब ये दोनों वर्कआउट नहीं कर रहा। व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटीज? तो 7 + 6 इज 13, बट 13 का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 है, 1 नहीं है। 8 + 5 इज 13, 13 का अगेन 3 है, 1 नहीं है। 8 + 4 इज 12, 12 का 2 है, 1 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली 10 माइनस कर दे रहा होगा। मैं 6 और 7 को ऐड करता हूं तो आई एम गेटिंग 13, बट 13 में से अगर मैं मान के चलो कि माइनस कर दूं 10, तो मैं 3 ही मिलेगा ना, यहाँ आ गया। द सेम थिंग अप्लाई हियर कि प्लस किया तो मेरे पास 8 + 5 की वैल्यू कितनी आती है? तो सर 13। फिर से यहाँ पे क्या किया सर? 13 में से 10 माइनस कर दिया एंड आई एम गेटिंग 3, वो मैच किया यहाँ। द सेम थिंग अप्लाइज हियर ऑल्सो। तो ये है कि नहीं है वो ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो 4 + 7 आई एम गेटिंग 11। नाउ 11 में से मुझे क्या करना होगा? 10 माइनस करना पड़ेगा, आई एम गेटिंग 1। क्या ये वर्क कर रहा है? ऑप्शन देखना पड़ेगा। हाँ ये वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब यही मेरा पैटर्न रहा होगा। ऐसे में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ जाता है, ये बॉक्सेस वाले या कुछ भी ऐसा एक ट्रायंगल बना देता है, सर्कल बना देता है, पेंटागन बना देता है, तो इसको बहुत केयरफुल होकर के हमें सॉल्व करना है। एंड जब तक आपको एक पैटर्न जो आप सोच रहे हो उस पर सब मिलता हुआ नहीं दिखे और आपको ऑप्शंस भी उस पर नहीं मिले, रैंडम आंसर खास करके ये सीरीज वाले क्वेश्चंस में ना मार्क करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, दैट्स इट। 16 क्वेश्चंस हमने लिया था। सो वंस अगेन थैंक यू, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर। इसको इतना शेयर कीजिए कि सब लोगों को सीरीज का बेसिक जो होता है ना वो एटलीस्ट क्लियर हो जाए। एंड बेसिक जो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे पैटर्न की पावर या क्यूब है डिफरेंस में, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस करी हुई है। ठीक है, सो प्लीज डू शेयर दिस एज मच एज एंड कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो हमारा लेटेस्ट सीरीज वाला आएगा। बाय बाय।